गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो एज यू नो मैम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। डॉक्टर हैज़ आस्क्ड हर नॉट टू गेट आउट ऑफ बेड फॉर नेक्स्ट 4 days, अदरवाइज इट विल बी वेरी वेरी सीरियस। सो बट स्टिल शी वॉज रेडी टू टेक द क्लास, तो वी सेड नॉट एट ऑल। कल की क्लास शायद अभी वो मानेंगे नहीं, 2 दिन छुट्टी देना, तो शायद लेट अस सी आज कैसा है। कल 11 से 5 सर कल ही खत्म हो जाएगा। हाँ सर, शाम को पार्टी वार्टी होगी ना सर। शाम को तो मैं दिल्ली में लड़कियों को तो बोलूँगा बिल्कुल बाहर मत निकलना। मैं खुद अवॉइड करता हूँ कल के दिन शाम को बाहर निकलना। सो इट्स नॉट एट ऑल सेफ। If you are thinking of going to CP etc., forget about it. CP is closed. CP is closed for outside people. So CP is closed for outside people. Remember, don't roam Delhi. This is Delhi, not other Bangalore or Hyderabad that you can go out on the New Year's Eve. You will realize कल ही लाइन दिखेगी आपको डिमोनेटाइजेशन से भी बड़ी ऑन द फ्रंट ऑफ अल्कोहल शॉप्स। सो एंड अल्कोहल का प्रॉब्लम है कि आदमी को लगता है वो सुपरमैन बन गया। सो So El Nino, I guess we have done the initial part of El Nino. क्या होता है in the El Nino? So in the normal conditions, winds flow from east to west because there is a high pressure over Peru coast and there is a low pressure over the Australian coast. But during the El Nino, the pressure conditions are reversed. Why the pressure conditions are reversed? क्योंकि the Peru-Chile coastline experiences warm current, and as it experiences warm current, therefore this becomes a low pressure belt and the Australia becomes relatively high pressure belt. Therefore winds start flowing from low pressure, that is from east to this becomes a low pressure belt and this becomes an high pressure belt, and therefore the winds start flowing from high pressure to low pressure. So what is an El Nino? El Nino is a phenomena which belongs to the central or eastern part of southern Pacific. El Nino is a phenomena that belongs to the central or eastern part of an southern Pacific. Central क्योंकि north, central, south. So central and west or east Pacific, east Pacific. So central and eastern Pacific. याद रखना this, because central मतलब ये नहीं, not this central. North, central and south, west and east. So El Nino is a phenomena which belongs to the eastern Pacific and central Pacific. So where we have stopped last time? Carrying warm water. Carrying warm water towards the west to east. So you can take down thus the warming of Central and Eastern Pacific is known as an El Nino. Warming of Central and Eastern Pacific is known as an El Nino. Thus the warming of Central and Eastern Pacific is known as El Nino. Just a minute. क्या लिखवाया था? हाँ? पहले क्या? हाँ, तो इसी के कारण वार्मिंग हो रहा है ना।
ये मैंने सिर्फ प्रीलिम्स के लिए लाइन लिखवाई है. Fine with this? Up, take down the question. Question is, though El Nino is a local phenomena, its effects are seen globally. Elaborate. Elaborate भी हो सकता है, enumerate भी हो सकता है. ये आवाज नहीं जा रही है, नीचे आ रहा है तो कैसे डालना है इसको? So what you, अगर ये क्वेश्चन आता है, this question we had given even in the test series जो मेंस का है, so this is a very good question and इसमें क्या लिखना है? So El Nino, there are two demands of the question. एक तो El Nino is a local phenomena and if its effects are seen globally, that is the second demand of the question. So कभी भी ऐसे question होगा तो you will have to write in half of the page what is an El Nino along with the diagrams. And उसके बाद you will have to tell the effects of El Nino in different parts of the world. That is why we say it is an global, its effects are seen globally. Say what happens in the Indian Ocean, what happens to the coral reefs, what happens to the cyclones in this region. अगर question है elaborate या enumerate, it will not make any difference. The only difference is enumerate मतलब specifically UPSC is asking you to write in points. Point number 1, point number 2, point number 3. Enumerate. And elaborate means you can write in paragraph form या point format. The answer will be same. Critically analyze नहीं आएगा ऐसे question में because there is nothing we can do on the analysis here. Getting it? Elaborate, analyze या enumerate. Only difference is if the question comes analyze, you will have to write the same thing, but conclusion में you will have to give कि how does the climate change is affecting the El Nino. That is, how does climate change affect the El Nino? The phenomena which is coming after, which should come after every 7 to 8 years, is now repeating after every 2 to 3 years. That is how the global warming and El Nino. That is, analyze में you are thinking on something, and analyze and elaborate में यही difference है. Analyze में the UPSC will expect you to provide a solution or to provide your own views on the question. Critically analyze and analyze. You provide your own views of the question. Analyze and critically analyze. Critically analyze positive aspects, negative aspects, and then solution or conclusion. Conclusion in your own words. Analyze the particular phenomena and conclusion in your own words. So geography में critically analyze will not come unless the question is on wetlands, floods, disasters. Getting this? So the first effect of El Nino. What is the first effect? So we are writing the answer, that is effects of the El Nino. ये prelims के लिए भी करना है, and this is the question that can come. So what is the first effect? दोनों diagrams बहुत छोटे कम space में या a combination of both the diagrams. So what is the first effect? ईस्ट ऑस्ट्रेलिया ड्राई होगा, उससे पहले द फर्स्ट इफेक्ट ऑन द सोर्स जहाँ पे हो रहा है. सो वेरी हेवी रेनफॉल, यू कैन टेक डाउन वेरी हेवी रेनफॉल. इसी वही हम लिख रहे हैं, ग्लोबली कैसे अफेक्ट कर रहे हैं. सो द वेरी हेवी रेनफॉल इन पेरू चिली रीजन, in the Peru-Chile region, which causes floods as well as destruction of infrastructure.
Next. The economy of Peru and Chile, which is dependent on fishing, is destroyed because upwelling stops. Similarly, fertilizer industry is affected. So fishing and fertilizer is negative. क्यों प्रीलिम्स के लिए? देखो मैं इतना इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि प्रीलिम्स के लिए अगर आता है तो why does the fishing industry is destroyed? Because upwelling stops. So with this you should know, कल अगर generalized question आता है कि the zones of upwelling are the good fishing grounds of the world. True or false? True. Fine. Whenever there is an upwelling. Third, effect on Australia. What will be the effect on Australia? Droughts, forest fires. And tell me what will happen to the cyclones in Australia. Willy willies or cyclones? बढ़ेंगे, कम हो जाएंगे? You get here the answer. Cyclone is a low pressure center या high pressure center? Low pressure. So during the El Nino there is an high pressure. Right? During the El Nino there is a high pressure. So willy willies will reduce in intensity. Because cyclones के लिए there has to be a low pressure. But now Australia is getting converted into high pressure and therefore the cyclones will reduce. Anticyclones are not that important. Tropical cyclones will reduce in intensity over Australia. What about Bay of Bengal? So they will increase, sir. They will increase in intensity. Why? So high pressure zone है वहाँ conversely low pressure zone होगा comparatively. So and so के ऊपर भी depend करेगा. Tahiti index. So don't write anything regarding the tropical cyclones and India. Because it is dependent upon Indian Ocean dipole. So what is this Indian Ocean dipole? Wait for some time. So second is Australia. Over Australia. Third, effect on Australia and Indonesia. ऑफशोर बन जाएगी ना ट्रेड. ऑनशोर. सो ऑनशोर, हाँ ऑनशोर होगा इसलिए तो रेनफॉल ला रही है वो. चेंज हो जाएगी ना. ऑफशोर थी पहले, अब ऑनशोर हो गई. पूरा ग्लोबल, इसलिए तो क्वेश्चन दिया है ग्लोबल सर्कुलेशन पे क्या इफेक्ट है. थर्ड, इट कॉजेज ड्रॉट्स and forest fires. It causes droughts and forest fires in Indonesia and Australia region. But full stop के बाद but the tropical cyclones in Australia, मतलब क्या? Willy willies. Tropical cyclones in Australia reduce in intensity. Tropical cyclones in Australia reduce, not intensity, just write reduce. Fine. Fourth, as the ocean becomes warmer. क्यों ओशन वार्म हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे वार्म करंट तो है बट देयर इज नो रेनफॉल. सो व्हेन इन द नॉर्मल कंडीशन व्हेन दिस वाज अ वार्म करंट, बारिश आती थी and it used to reduce the temperature of ocean. Now there is a warm current but there is no rainfall. As there is no rainfall, so the heat increases. Because the heat increases, even if 1 degree change in the temperature is there, corals start dying. So coral bleaching occurs during the El Nino. So as the ocean temperature increases, large scale coral bleaching events
large scale coral bleaching events are associated with El Nino, affecting marine food chain, as well as ecosystem services of corals. Corals may you will understand what do you mean by ecosystem services of corals. Ecosystem services of corals. Example 2018. There was large scale bleaching of Great Barrier Reef. कौन सा 2018? Jan, not now. जब उनका समर्स था पिछला, इस साल अल नीनो नहीं है. 2018 was associated with large scale bleaching of Great Barrier Reef. What is Great Barrier Reef? The largest natural structure on the earth, the largest coral reef on the earth. इतना बड़ा structure और कोई living being ने बनाया नहीं है. It can be seen even through space. ऐसा myth है. It can be seen also through space is a myth. It cannot be seen through the space. That is, ऐसा लगता है कि मून से भी वो दिखता है, impossible है. मून से अर्थ ही इतना छोटा दिखता है. How can you see the coral reef? Myth है कि Great Wall of China and coral reefs ये दोनों space से दिखते हैं. That is a myth. Next. Mouse barrier reef मुझे नहीं पता. Take down the next point. बाद में चूहे भी बाद में environment ecology में. There is large scale melting of ice caps. In Antarctic. Causing rise in the sea level. Full stop. Due to this, many coastal regions and corals in other parts of world, that is Indian Ocean, in the other parts of the world, that is Indian Ocean, may undergo bleaching. Why does the coral bleach? What do you mean by corals bleaching? How are corals? Colorful या white in color? Colorful. क्यों they are colorful? Because they are in the symbiotic association with algae. उनको कहते हैं zooxanthellae. That this zooxanthellae will produce food and give it to corals, and they give color to the corals. As soon as water level rises, many photic regions जहाँ पे sunlight can penetrate become aphotic. अब पानी का लेवल बढ़ गया इसलिए सनलाइट कैन नॉट पेनिट्रेट, इसलिए द zooxanthellae जो है दे स्टार्ट लिविंग द कोरल्स, वो किसी और जगह निकल जाते हैं. As they start living the corals, coral does not get food and they do not get color. So the corals start turning white. As they start turning white, we call this as a coral bleaching. Coral bleaching is an indicator of environmental degradation, of climate change, because coral bleaching can occur only if 1 degree rise in the sea's surface temperature occurs. Or coral bleaching can occur even if there is too much pollution in the water.
because zooxanthellae are very sensitive. This is your statistical part, static part. Current affairs में there are new corals which are known as cold water corals. These cold water corals are found in the deep ocean. लिखो मत कुछ, ये सब corals के notes में है, current based, updated. So these cold water corals are the corals which live in the deep sea. Obviously, जितना नीचे जाओगे हम ocean में, उतना temperature is going to increase. They live in the deep sea, and these are the new corals which have been discovered outside the tropics. Corals होने चाहिए only in the tropics because heat is present only here. They have been discovered outside the tropics, and these cold water corals are not in the symbiotic association with zooxanthellae. And then how do they manufacture their own food? They manufacture their own food by capturing the animals. They are very good, beautiful, and because they are beautiful, fish etc. gets attracted towards them. As soon as fish etc. gets attracted towards them, they will sting them. And as soon as they sting them, the fish dies and they capture the fishes. So these are the cold water corals, discovered just last month. And that is why question can be there in the cold water corals. कहाँ पे? यूरोप में. कहाँ पे? फ्रांस में. So क्योंकि corals एक ऐसा टॉपिक है कि हर साल एक या दो क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि they are having the highest biodiversity outside the tropical evergreen forest. So ये हम geography में पढ़ते हैं. Corals have more animal life, and animal life is known as phyla. ये आप biology में पढ़ते हैं. इस साल ज्योग्राफी के दो स्टेटमेंट थे और एक स्टेटमेंट था बायोलॉजी का, एंड दे हैड आस्क्ड यू व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द कोरल्स. देयर हैज बीन नो क्वेश्चन अभी तक ऑन द कोल्ड वाटर कोरल्स, दो इट हैज बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली आल्सो, एंड इससे पहले भी थोड़ा बहुत आया था न्यूज़ में इन 2015 के आसपास. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द कोल्ड वाटर कोरल्स आल्सो. और दे कैन आस्क यू कोरल रीफ्स इन इंडिया आल्सो, और दे कैन आस्क यू अल नीनो एंड कोरल ब्लीचिंग. सो अल नीनो एंड कोरल ब्लीचिंग विल बी important. Fine with this? Next point. हमेशा ट्रॉपिकल में. कोरल्स में मैं आऊंगा. Next, the intensity of summers, the intensity of winters, the intensity of winters, the intensity of winters in the Canada and US reduces. In Canada and US reduces. Canada and US reduces. And also the hurricanes. Hurricanes कहाँ पे है? USA में. That is यहाँ पे hurricanes है. Reduce in intensity. Hurricanes reduce in intensity. Hurricanes reduce in intensity. HURRICANES. Hurricanes reduce in intensity. Fine. Next. Warm water, it will expand and it will have the effect on the land. So they will reduce in intensity. गर्म पानी है ये expand होगा, it will go to the north. Next. El Nino years are positively associated with, underline the word positively associated with droughts in India. What do you mean by positively associated with droughts? Most of the time it will be drought in India. That is, example, 7 out of 10 years, 7 out of 10 El Nino years, 7 out of 10 El Nino years. अगर 10 बार El Nino आया तो उसमें से 7 बार इंडिया में drought होगा. 7 out of 10 El Nino years will be drought years in India. Will be drought years in India. Now understand why. So this is the global effect of El Nino. Fine. एक last point, and then I will explain you the relation of Indian monsoon and El Nino. One last point.
with the increasing climate change, associated with global warming, the occurrence of El Nino has increased. Now what is our monsoon? अब तो हमारे यहाँ पे there is a high pressure, but as soon as the June will come, India will get converted into a low pressure region. As it gets converted to the low pressure region, what will happen to the winds? Winds will start coming from this high pressure, get deflected to the left hand side in the southern hemisphere, they will cross the equator and they will come towards India, they will come towards Thailand, they will go towards Indo-China region मतलब Vietnam, Laos, Cambodia. Then there will be extreme heating of the Tibetan plateau. बहुत ही फास्ट मैं बता रहा हूँ अभी. There will be extreme heating of the Tibetan plateau. Due to the extreme heating of the Tibetan plateau, the air from the Tibetan plateau will rise upwards. Getting it? Why there will be extreme heating of the Tibetan plateau? Because the Tibetan plateau is located at a height of 5.5 kilometers above the sea level. Highest plateau in the world. And इसलिए उसको sunlight ज़्यादा मिलती है. It receives 2% more insolation than the surrounding low-lying regions. It receives more insolation. Example, if you go to Tibet or if you go to Leh Ladakh, even during the summers at 18 degrees Celsius in the daytime, temperature कम है, insolation ज़्यादा है. So even at 18 degrees Celsius, skin burn होता है, sun burn हो जाता है. Why? Because we get more amount of insolation. दिल्ली में 40 डिग्री में भी sun burn नहीं होगा. You are much nearer to the sea level. Delhi is very near to the sea level. Great plains है, right? दिल्ली से ज़्यादा height पे ग्वालियर is there. दिल्ली से ज़्यादा height पे भोपाल is there. So Delhi is very near to the sea level. So till the time the sun rays come down, they are filtered by the atmosphere. But यहाँ पे without filtering, the sun rays come. Therefore, the wind from here rises upwards. Once it rises upwards, that is air because of heating rises upwards. You know that जब भी air ऊपर जाएगी, due to the rotation of the earth, it will be bifurcated. एक जाएगी to the north, that is it will rise from here. एक जाएगी to the north. Forget about this air. One air will come to the south. And as it is coming to the south, that is it will try coming towards the south. Understanding this? Just try to imagine this top view and this side view. As it is coming to the south, सीधे आएगी or will it get deflected to the right in the northern hemisphere? It will get deflected to the right in the northern hemisphere. As it gets deflected to the right in the northern hemisphere, हम इस wind को कहते हैं जो ऑर्डिनरी ऊपर के हाइट में है as easterly jet stream. क्या करता है ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम? मॉनसून विंड्स को इंडिया में की तरफ ले आता है. दैट इज दिस रेड कलर विंड्स को वो इंडिया की तरफ ले आएगा. सो कैन यू अंडरस्टैंड हाउ कॉम्प्लेक्स इज इंडियन मॉनसून? कि इंडियन मॉनसून डिपेंड्स अपॉन हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द पैसिफिक एल नीनो, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द टिबेटियन प्लाटू, बिकॉज अगर टिबेटियन प्लाटू इज नॉट हॉट देन देयर विल बी नो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम. Then this easterly jet stream over the period of time it will go and settle over Madagascar region. जाके air will become colder and because it becomes colder, imagine this as India, then this is Indian Ocean and this is the island of Madagascar. So this is the island of Madagascar. This air will become colder because it has gone up
it becomes heavier, and coincidentally it comes and settles near Madagascar or somewhere around Madagascar, and hence there is a high pressure over Madagascar. When the air is settling down, there is high pressure. Once the air settles down, high pressure, what is the law of wind? From here, this high pressure will be attracted towards the low pressure. It should have gone towards Africa, but thankfully for us, ये पूरा mountains है, Rift Valley, the Great East African Rift Valley. Therefore, winds वहाँ उस तरफ नहीं जा सकती. Geomorphology में पढ़ा है हमने. This is a Rift Valley. Rift Valley के आसपास there is a block mountains. So as a result of this, the winds come towards the India as the southwest monsoon winds again. So they start coming from the Australia, get deflected. After getting deflected, they come towards India as the southwest monsoon. Then the air from Tibetan Plateau rises, settles over Madagascar, and it will come and settle over it will come towards India as the southwest monsoon. This is the two normal monsoon here. The third kind of a wind in the normal conditions, this is high pressure, fine? So यहाँ पे wind will settle down in the normal conditions, not during the El Nino. Then it will flow towards Australia. Can you imagine? It is flowing towards Australia. Everyone, ऊपर जाके it reaches Australia, it becomes hot. Again it is bifurcated into two branches. एक branch आता है again towards South America and settles. इसको हम कहते हैं Walker cell. Right? The second branch rises up and it goes and settles over somewhere. जितना वो distance can travel कर सकता है वो settle होता है somewhere here. It will rise from here during the normal condition because ये low pressure है. It will come and settle over this region, resulting into formation of high pressure here. यहाँ पे settle होते ही it will get deflected to the left. But most of the winds कहाँ किस तरफ जा रही है? It is going towards, it will go towards the equator, and after crossing the equator, it will come towards India, or it will go to the Indo-China region, but mostly towards India, क्योंकि ये high pressure देखो ऐसे जगह form हो रहा है, it is forming at such a place that these winds are coming towards India, and thus we get very very heavy rainfall. Otherwise Australia is, अगर हमने सोचा कि Australia से ही the entire wind will come towards India, it is not true, because Australia से जो the stronger the high pressure in Australia, there is a low pressure towards India also, but there is a low pressure here also. Most of the winds are deflected towards Indo-China region, that is towards Vietnam. For the winds to come towards India, high pressure has to be here or high pressure has to be here. So this is the normal condition. What happens during El Nino? During the El Nino, there is a low pressure here. Where is the high pressure? High pressure is here. So wind, instead of rising upwards, wind will settle down. Wind will flow towards South America and it will rise from here. Deflection यहाँ पे होगा. It will go and settle towards, यहाँ पे कौन सा ocean है? Atlantic है. Just remember, this is Pacific, this is Atlantic, and that is Indian. So wind यहाँ पे ऊपर आएगी. But ऊपर आने के बाद it will get deflected, it will travel this entire distance and it will come and settle over Australia. So there is no question कि wind is rising from Australia. So if the wind is not rising, deflection होगा? नहीं होगा. If the wind is not rising, then obviously there is no deflection, मतलब कुछ भी यहाँ पे settle नहीं होने वाला. कुछ भी यहाँ पे settle नहीं होगा तो ये monsoon winds weak हो जाएगी. और जितनी वीक हो जाएगी मॉनसून उतना पूरे इंडिया में कम बारिश. There will be less rainfall in entire India. Why? Because this high pressure is destroyed. And thus we say कि El Nino is positively correlated with droughts in India. When we say droughts in India, you should remember the two regions of India will never face drought, and that is the western coast of India and northeast India, क्योंकि these two parts will get rainfall even if there is a local high pressure and low pressure. That is, समंदर अगर ठंडा है and land is hot, then also these regions will get in the
rainfall. Drought in India means central part of India will not get rainfall or North India will not get rainfall, because winds have to be very strong so that they give enough moisture, uske baad bhi moisture is left and they reach the North India. Otherwise, we will have drought. So obviously we have drought during the El Nino years. But surprisingly, 1997 was the strongest El Nino year. And as the 1997 was the strongest El Nino year, we had just come out of liberalization, privatization phase. Jobs nahi thi, economy was just recovering, and government thought कि El Nino hai, means it will cause large scale death and disaster in India. But 1997 surprisingly was the strongest monsoon. Strongest El Nino and strongest monsoon rainfall in India. मतलब इंडिया में drought नहीं था. तो फिर there was large scale study done in Indian Ocean कि ऐसे कैसे हुआ कि इंडिया में तो El Nino should have caused droughts. Then they discovered कि El Nino से भी ज़्यादा phenomena, greater phenomena is there in Indian Ocean, and it is known as Indian Nino or Indian Ocean Dipole. So मॉनसून इज अफेक्टेड, इसलिए मैंने तब हमने जब मॉनसून किया तो बहुत ऊपर से किया. मॉनसून इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हीटिंग ऑफ इंडिया, सेकंड बाय हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ पैसिफिक ओशन, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ टिबेटियन प्लाटू, थर्ड हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ पैसिफिक ओशन, एंड फोर्थ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ टू पोल्स ऑफ इंडियन ओशन, जिसको कहते हैं इंडियन ओशन डाइपोल. गेटिंग दिस? And 2018, अब पता चला है, research has come out that monsoon is influenced by melting of ice in Arctic and Antarctic. So even the melting of ice in Arctic and Antarctic is influencing Indian monsoon. So Indian monsoon is such a complex mechanism. That is why you see that India and France, to study monsoon, has spent a special satellite known as Megatrophics. Megatrophics is a satellite to study the Indian monsoon. इससे पहले India and USA have done an expedition on Indian Ocean region to understand monsoon without success. उसके बाद India and Russia took the expedition without success, and those experiments were known as MONEX experiments. MONEX experiments करते करते ही पता चला कि there is an Asian brown cloud वाला phenomena. Understanding monsoon. So why El Nino affects Indian monsoon? Because it destroys the high pressure over the southern Pacific, and therefore winds cannot come towards India. कोई doubt? El Nino में क्या होता है? यहाँ पे to form an high pressure, wind should rise from here or it should subside. When their winds will come and settle here, high pressure matlab winds are coming and settling here. When they will come and settle? If the wind rises from here or if the wind subsides here? Rises. Winds will get bifurcated, they will travel some distance, ठंडी हो जाएगी और कहीं तो यहाँ पे subside हो जाएगी. What happens in El Nino? Wind rises or wind subsides? Wind subsides. So when the wind subsides, there is no question कि wind will come and settle here. If there is no question of wind coming and settling here, means there will be no high pressure. If there is no high pressure here, that means there will be no winds coming towards India. El Nino. Because wind is subsiding from here, it will flowing towards the low pressure, it is rising from here, it is getting bifurcated, एक जाएगी towards Atlantic Ocean, एक जाएगी and will again come and subside over Australia. Because वो Atlantic Ocean की तरफ जाएगी तो Gulf of Mexico cyclones नहीं बनेंगे. नॉर्मल कंडीशंस में तिब्बत से जब मेडागास्कर की तरफ आती है तो सदर्न हेमिस्फीयर में आने के बाद डिफ्लेक्ट लेफ्ट की तरफ नहीं होती है, बट बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट होने से पहले ही वो मेडागास्कर पे सेटल हो जाएगी. एक्चुअली वो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ऐसे जाती है, फिर सोमालिया से डिफ्लेक्ट होके ऐसे होती है, ऐसे नहीं जाएगी वो. इट विल गो, इट विल कम टुवर्ड्स सोमालिया, देन इट विल बी डिफ्लेक्टेड टू द लेफ्ट, उसका लेफ्ट, एंड इट विल कम एंड सेटल ओवर हियर. सो वेट फॉर मॉनसून टिल फॉर द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम. We are not doing the easterly jet stream now. I just told you why we are not going to do Indian Ocean Dipole now.
We'll do that in monsoon. I just told you why El Nino causes droughts in India. And why La Nina this year will cause heavy rainfall in India. So was the rainfall good in India this year? Yes. Rainfall was good, therefore winters are good. Because the winters are good, there will be more ice in the Tibetan plateau. So more the ice in the Tibetan plateau, there will be more melting in summers. If there is more melting in summers, there will be more trapping of heat. If there is more trapping of heat, next year monsoon will be good. But if the ice does not melt, next year there will be drought in India. Because सबसे important in सब में है easterly jet stream. If the easterly jet stream is not strong, Madhya Pradesh, Maharashtra, interiors of Orissa, interiors of Karnataka, interiors of Andhra cannot get rainfall. Because there has to be, ये जो belt है इसमें rainfall के लिए the winds have to be deflected in India, and this will be done by easterly jet stream. ये जो सर ऑस्ट्रेलिया है इसके ईस्टर्न में ही हाई प्रेशर होगा या फिर वेस्टर्न में? ईस्टर्न में ही, सिर्फ ईस्टर्न में, वेस्टर्न में लो. मानसून पहुंचेगा यहाँ पे. Yes, but it will be very weak. It will give rainfall to Bay of Bengal. It will give rainfall to Bengal. It may give rainfall to Eastern Bihar. बाद में खत्म हो जाएगा पानी. Because winds are not stronger. Winds have to be stronger for monsoon ताकि अंदर तक बारिश मिले. Getting it? Rainfall तो होगा ही. Rainfall कम होगा. Drought means less than 50 millimeters of rainfall. 25% deviation in the normal rainfall is drought. But there are different definitions of drought. For example, this year there has been good rainfall. Still Maharashtra is facing a drought. 27,000 villages in Maharashtra has been declared as a drought prone. Why? That is not meteorological drought. That is an hydrological drought. Cropping pattern induced drought. If you are taking sugarcane, obviously sugarcane will take more of an water and therefore there will be droughts. So droughts are caused due to different factors. There is meteorological drought, there is a soil moisture drought, there is a hydrological drought, and the extreme form of drought, जब खाना नहीं मिलता, that is famine. But famines will never be there in India because famines cannot be there in any democratic nation. इतना याद रखना. Famine क्या है? भूखमरी. So कल 2 साल अगर इमेजिन करो इंडिया में बारिश नहीं आती तो famine होगा? नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल मेक श्योर दैट आपको खाना मिलेगा. It will import the food, it will do anything. So famines can never be there in any democratic nation. This is the biggest concept which was given by Amartya Sen. That is, the famines can never be there in any democratic nation. Understanding this? Yes. Therefore, we have written. What we have written? We have not written that El Nino causes droughts. We have written it is positively associated with droughts. Means most of the case there will be droughts. Yeah. It will decrease. It will decrease. Many things, at many places it is written it is going to increase. It is going to decrease. Because there has to be low pressure, but during El Nino there is an high pressure. कभी नॉर्मल में होगी बारिश, मानसून टाइप ऑफ रेनफॉल. जरूरी नहीं है. El Nino नॉर्मल कंडीशन. यस. El Nino occurs during their summer season. Their summer season में there is a low pressure. Summer season मतलब summer season. How can summer season means winter? समर से मतलब दिसंबर का
मंथ हाँ हाँ सर दिसंबर मंथ हाई प्रेशर सर वहाँ पे अनसेफ बनेगा सर हाँ हाई हाँ, वहाँ पे बाई फर्स्ट तो जरूर होगा सबसे सरफेस विंड तो सर सरफेस विंड होगा ना, सरफेस विंड से हमें फ़ायदा नहीं है ना, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है यहाँ पे, ग्रिड डिवाइडिंग रेंज माउंटेन है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। तो सर मतलब सिस्टम के दो पार्ट रहे हैं सर यहाँ पे हाई, यहाँ पे लो। नहीं समझ में आएगा इतना आसानी से, इंडियन मानसून तक रुक जाओ। अंडरस्टैंडिंग दिस? हाई प्रेशर जो इस टाइम में हाँ, लो प्रेशर नहीं सर अभी, हाँ थर्मल तो फर्क नहीं पड़ेगा सर। विंटर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फाइन विद दिस? समझ में आया एटलीस्ट ऊपर ऊपर से क्या है अल नीनो? वी विल अगेन कम टू इंडियन मानसून एंड अल नीनो इन डिटेल। अभी समझ में आया व्हाट इज अल नीनो? So what is the relationship with India? It causes droughts or heavy rainfall in India? Droughts. Fine? La Nina. La Nina. La Nina is the sister of El Nino, which comes after El Nino. So last year was El Nino, this year is La Nina. And La Nina means nothing but, Nina means girl, Nino means boy in Spanish language. So it is nothing but extreme of normal condition. Or intensification of normal condition. So what is the normal condition here? क्या है यहाँ पे normal condition? हाई प्रेशर और लो प्रेशर? हाई प्रेशर। नॉर्मल कंडीशन बहुत आसान है याद रखना। व्हाट इज द कोल्ड करंट या वार्म करंट? कोल्ड करंट। सो कोल्ड करंट मीन्स हाई प्रेशर। सो ड्यूरिंग द नॉर्मल कंडीशन व्हेन देयर इज एन, अंडरस्टैंड, during this is the El Nino, this is the normal condition. There is a cold current, that is a Humboldt current. Now during the La Nina years, if this is our South America and if this is our Australia here and if this is the Pacific Ocean, so during the La Nina years trade winds become very strong. As the trade winds become very strong, trade winds are flowing offshore from here, they remove large amount of surface water. Instead of normal surface water, they remove large amount of surface water from here. अगर ज़्यादा surface water is removed from here, there will be greater amount of upwelling. As there is a greater amount of upwelling, याद रखना अभी आज के लेक्चर में हम देखेंगे 500 मीटर के बाद the temperature is very less in the oceans. ये जो temperature है, it is only in the upper layer, and after 1 kilometer in the ocean, anywhere in the world, whether it is equator, whether it is desert या whether it is Arctic, the temperature of ocean is 1 degree Celsius. मतलब नीचे का पानी हमेशा ठंडा होता है. So as the large amount of surface water is removed, there is large scale upwelling, and therefore this region becomes very cold. So can I say, instead of normal this thing, Humboldt current, the Humboldt current is intensified and it becomes extremely cold. This extreme cold current is what is known as La Nina. So what happens in the La Nina? The high pressure is intensified. Fine? Because large amount of winds will be forced to subside. Instead of single wind coming and being subsiding, large amount of wind will subside. So greater amount of winds or greater amount of air will flow towards Australia. Fine? And यहाँ पे तो permanent, there is a East Australian current which is a warm current. Fine? Getting it? There is an East Australian current, and this warm current will force greater amount of air to rise up. So instead of single arrow, we are making 2-3 arrows to show that there is a greater amount of air. अब understand one thing. Australia के बाद this is Indian Ocean. Indian Ocean के बाद there is Africa somewhere here. Which Indian Ocean? Southern Indian Ocean. उल्टा नहीं है ये, ऐसे
ये क्या है? साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंडियन ओशन एंड अफ्रीका. आई एम जस्ट ड्रॉन दिस मैप एज इट इज हियर. द ओनली थिंग इज ये टॉप व्यू है, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू. So as the greater amount of air is going up, large amount of air is bifurcated, some part will go and complete the Walker cell, and equally large amount of air is going towards Africa, क्योंकि ऊपर जाके air घूमेगी. There will be bifurcation due to the rotation of the earth. As the greater amount of air goes here, पूरा अफ्रीका तक तो वो पहुंच नहीं पाएगी because it is very cold, so it will come and settle somewhere in the middle of Indian Ocean. And therefore, this high pressure which was there will be intensified. What is the law of wind? Law of wind is high pressure to low pressure. डायरेक्शन कौन सा देगा? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, फिर वो डिफ्लेक्ट होगी. इफ दिस हाई प्रेशर इज इंटेंसिफाइड, लार्ज अमाउंट ऑफ विंड्स फ्रॉम दिस रीजन, मॉइस्ट एयर फ्रॉम दिस रीजन विल ट्रैवल टुवर्ड्स, कहां पे लो प्रेशर? इंडिया. As the large amount of winds travels towards India, we say La Nina is associated with heavy rainfall in India. Example is 2018 Kerala floods, Mumbai floods, the floods in Bihar, the floods in Assam, the floods in Jammu and Kashmir. क्योंकि excess push मिलता है, वो push कौन देता है? This high pressure. Excess push मिलता है to the winds. Getting it? एंड ला नीना में ये ब्लैक कलर की जो विंड्स है ये गायब हो जाएगी. सो जो ऑलरेडी जो विंड्स है दे बिकम वीक, बट ड्यूरिंग अल नीनो द विंड्स बिकम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड देयरफॉर ला नीना इज एसोसिएटेड विद गुड मॉनसून रेनफॉल इन इंडिया. यस, अंडरस्टैंडिंग दिस. नॉर्मल कंडीशन क्या है? इंस्टेड ऑफ एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ एयर, थोड़ी बहुत एयर नीचे आती है, and therefore this high pressure is not intensified. But La Nina में this high pressure becomes intensified. ये जितना ज़्यादा बड़ा होता है, and greater the difference between high pressure and low pressure, stronger will be the winds. So remember, what is the driving force for the wind? Pressure gradient force. Coriolis तो एक direction देता है. So driving force for the wind is pressure gradient force, and therefore we say कि if this high pressure is stronger, मॉनसून, दैट मीन्स जितना ठंडा है पैसिफिक उतना स्ट्रॉन्गर इज द मॉनसून इन इंडिया. जितना गर्म है पैसिफिक उतना वीकर इज द मॉनसून इन इंडिया. गेटिंग दिस? सो ला नीना, गुड रेनफॉल, गुड रेनफॉल. सो राइट नाउ द गवर्नमेंट इज थिंकिंग ऑफ गिविंग लोन वेवर टू द फार्मर्स बिकॉज दे कैन प्ले विद द इकोनॉमी. बम्पर क्रॉप आता है. There has been such a good rainfall this year कि you have seen onion का price in the market has gone to 1 rupees a kg. इतना ज़्यादा has been this thing. There is one student of ours comes from very very normal family. इस साल first attempt है. First attempt में he got interview call. So he had joined the GS crash course here and Pol Science तो उसका optional था ही. So I'm telling you how he's fighting. He sells onions in his village and still he managed to get interview call in the first attempt itself. So in the new year, make your resolution very very stronger. Line मत लगाओ on the outside. एक साल के लिए सब छोड़ दो. Some specific shops आप छोड़ दो, उसकी तरफ देखना मत. 1 year it requires to, and he studied in Marathi medium, vernacular medium, did his engineering. So but engineers के English मुझे भी पता है, मैं भी engineer हूँ, because the thing is English is technical, English is बहुत अच्छी ज़रूरत नहीं होती. Still he could manage to get, he decided to do UPSC. उसके लाइफ में ऐसे कुछ हुआ, he decided to do UPSC in June. Joined मैडम का जून का बैच पॉल साइंस का, जो अभी अभी ख़त्म हुआ है. ज्वाइंड GS क्रैश कोर्स. GS का आइडिया नहीं था. क्लियर्ड द प्रीलिम्स, क्लियर्ड द मेंस, गॉट एन इंटरव्यू कॉल. अनियन से मुझे याद आया क्योंकि उसका परसों ही मेरे को व्हाट्सएप आया, ही इज सेलिंग अनियन इन हिज विलेज. सो बिकॉज 1 रुपया सरकार की तरफ से मिल रहा है, उससे अच्छा डायरेक्टली वो रास्ते पे बैठ गया.
So this is what is the fighting spirit. You should remember. Fine with this? So you can take down La Nina. La Nina. कौन सा? हाँ, क्योंकि बट समंदर वो इसलिए तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि जब सन ऊपर आ जाएगा, सन जब ऊपर जाएगा, बट वाटर की प्रॉपर्टी क्या है? वाटर टेक्स टाइम टू गेट हीटेड एंड टू गेट कूल्ड, इसलिए नीचे का पानी गर्म ही रहेगा ड्यूरिंग अल नीनो. सो ये लो प्रेशर. सन नीचे की तरफ है, ऑस्ट्रेलिया को गर्म किया, पैसिफिक बहुत ज़्यादा गर्म हुआ, अब सन इंडिया की तरफ आया, उसके बाद इंडिया में लो प्रेशर बना, ऑस्ट्रेलिया में हाई प्रेशर बना. बट व्हाट इज द लॉ ऑफ वाटर? इतना ज़्यादा गर्म था पानी की, पानी अभी तक ठंडा नहीं हुआ, सो पानी लो प्रेशर पे रहा, इसलिए लो प्रेशर टू लो प्रेशर विंड नहीं आएगी. गेटिंग दैट नाउ? योर डाउट वाज कि यहाँ पे तो हाई प्रेशर बनना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया पे तो हाई प्रेशर बनेगा, बट अगर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया पे हाई प्रेशर है, विंड ऐसे जाएगी, यहाँ पॉइंट से डिफ्लेक्ट होगी और सिर्फ वियतनाम में बारिश देगी. इंडिया पे तरफ विंड आने के लिए ये पूरा हाई प्रेशर होना चाहिए. यस. सो एक्चुअली ये गर्म होगा उनके समर्स में, पर इतना गर्म होगा कि हमारा समर्स आने तक दिस विल बी हॉट ओनली, बिकॉज वाटर टेक्स टाइम टू गेट हीटेड एंड टू गेट कूल्ड. लैंड विल गेट हीटेड एंड कूल्ड एट अ फास्टर रेट. नॉर्थ इंडियन ओशन, आर्कटिक से, आर्कटिक से, अंटार्कटिक से तो कनेक्टेड है. यू कैन सी हियर, दिस इज अंटार्कटिक. आर्कटिक बोला था मैंने, नॉर्थ इंडियन ओशन, नॉट द साउथ इंडियन ओशन. साउथ इंडियन ओशन तो किसका है? We are writing this, but El Nino is more dangerous. La Nina is good. See, there is a mass prayer done on every Christmas day in the Peru and Chile. In that mass prayer, they pray, Nino, Nino, El Nino, keep away. That means El Nino don't come. So that is not good. La Nina, तो they will like it because जितना dry conditions, उतना ज़्यादा fishing, उतना ज़्यादा fertilizers, उतनी ज़्यादा money. हर ये तो हर कोई कहेगा. सो यू कैन टेक डाउन ला नीना. ला नीना is an extreme of normal conditions. Extreme of normal conditions. Take next point. During the La Nina years, trade winds become strong. Trade winds become strong. Therefore they remove greater amount of surface water. Therefore they remove greater amount of surface water from Peru-Chile coastline. Sign ulti. This is because. Therefore, they remove greater amount of water from the Peru-Chile coastline, promoting stronger upwelling. Underline the word stronger upwelling. Upwelling of cold waters from below. Of cold waters from below. Waters from below. Upwelling is always of cold waters. Understanding this? Greater amount of water will come up. Stronger upwelling of cold waters from below. Full stop. This extremely cold current is known as La Nina. Is known as La Nina. और यूपीएससी के लिए और एक और इन अदर वर्ड्स ये भी प्रीलिम्स के लिए याद रखना, कूलिंग ऑफ
Eastern and Central Pacific. Eastern and Central Pacific. Cooling of Eastern and Central Pacific is known as La Nina. Is known as La Nina. Effects of La Nina. Effect. एक ही important है effect. There is heavy rainfall. There is heavy rainfall. Heavy rainfall in Australia. लो प्रेशर ज़्यादा होगा ऑस्ट्रेलिया पे. गेटिंग इट. ज़्यादा विंड ऊपर जाएगी. ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया and India. Example, 2018 is a La Nina year. Winters भी strong है इस साल, right? विंटर स्ट्रांग है तो पोल्यूशन भी ज़्यादा है इंडिया में. ये नया प्रॉब्लम है. ओशनोग्राफी एक लेक्चर, एक या दो लेक्चर, 12 लेक्चर. जब हम ज्योग्राफी करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी, तो दिस ज्योग्राफी जनरली इज 35 लेक्चर्स. We have increased by 10 lectures because geography के साथ साथ ही हम disaster management कर रहे हैं. So you have to consider this as geography and disaster management. Indian geography के साथ साथ ही मैं biodiversity करा दूंगा आपकी इंडिया की. नेशनल पार्क कौन सा है, कहाँ पे है. So environment ecology का एक substantial portion आपका complete हो जाएगा. Biodiversity, natural vegetation, soil degradation. फिर it does not make any sense कि geography अलग लो, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट अलग लो. फिर याद करो इन डिजास्टर मैनेजमेंट की ज्योग्राफी में हमने साइक्लोन्स में क्या पढ़ा था, एंड देन साइक्लोन डिजास्टर मैनेजमेंट. सुनामी क्या पढ़ा था, सुनामी डिजास्टर मैनेजमेंट. सो वी आर कंप्लीटिंग इट देन देयर ओनली. एंड मेंस पे पढ़ते समय आपको ये सब पढ़ना ही है. फाइन. टेम्परेचर, डू इट ओनली फॉर प्रीलिम्स. एंड फोकस ऑन एग्जाम्पल्स and factors. How we are going to study? We are going to study it in the terms of factors affecting the temperature of ocean water. Second, vertical distribution of ocean water temperature. Vertical distribution मतलब depth के हिसाब से. That is from 0 kilometers till 6,000 meters. And third, horizontal distribution. But you should remember, when we call the ocean water temperature, we mean only surface temperature of ocean water. We do not mean subsurface temperature, because in the water light can penetrate only up to the distance of 200 meters. So what is the source of temperature is the sun. But this source of temperature, the sun itself, cannot go beyond. So we talk only about the surface temperature, not the entire ocean ka temperature. We talk only of the surface temperature. We'll understand this in vertical distribution, क्योंकि after 1 kilometer किसी भी ocean का temperature is 1 degree Celsius. Fine. So the first temperature of ocean water में the surface temperature of water, of ocean water,
is around 25 degree Celsius, is around 25 degree Celsius. Fine, average temperature of the world. कुछ काम का नहीं है हमारा. Now you tell me, temperature will be greater in the northern hemisphere or in the southern hemisphere? Temperature of ocean water will be greater in the northern? Yes, southern. Why southern? There is no disturbance. Disturbance नहीं है सर, सीधा circulation. Average temperature of water will be greater in northern या southern? कहाँ पे land ज़्यादा है? Northern. Because land ज़्यादा है तो land will get more heated and that heat will be passed to the surrounding water. So the average temperature of northern will be greater or southern? Northern. Northern will be greater. इसमें disturbance भी तो है ना सर. किसमें? Southern में तो सर सारा उसी में तो Southern में, because winds are colder, therefore why southern में the temperature will be lesser? Because there is no land. As there is no land, mostly water में हमेशा evaporation से there will be clouds over the water and therefore albedo will be there. Getting it? So you can take down the average temperature of ocean water. The average temperature of ocean water is greater in the northern hemisphere. Is greater in the northern hemisphere because of the dominance of land and the excess heat from the land, and because of the dominance of land and the excess heat from the land is transported to the surrounding water bodies. Factors. What is the first factor? सबसे पहले कौन सा फैक्टर होगा? इंसोलेशन. हीट कहां से मिलेगी? सो याद रख करना, क्लाइमेटोलॉजी बहुत आसान है. इंसोलेशन is greater at the equator या insolation is greater at subtropical high pressure belt? Subtropical high pressure belt. The same law you will have to apply in the ocean water temperature. That is, in an average the temperature decreases from equator towards the poles in water, but the highest temperature is not found at the equator because in the equatorial regions there will be rainfall plus there will be clouds. Fine, and the clouds will decrease the insolation. यही हमने क्लाइमेट में पढ़ा था. The same rule applies to the water body also. किसका? नो, इंसोलेशन नो डाउट इक्वेटर पे ज्यादा है, बट इक्वेटर पे रोज शाम को बारिश होती है, 4 o'clock रेनफॉल, इसलिए टेम्परेचर कम हो जाता है एवरेज. सर एरिया का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता सर? किसका? अगर जो कोई चीज है तो उसका एरिया कम होगा सर. एरिया का कम इंक्लाइंड में है तो उसमें सब ज्यादा फर्क होगा, बट इक्वेटर पे क्लाउड फॉर्मेशन है. बारिश के लिए क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है, तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड तो आने ही नहीं देते, इसलिए कम है. Understanding this? So the first is insolation and latitudes. Insolation and latitude. Insolation and latitude. Oceanography first time कर रहे हैं. हाँ, तो वही लिखना है. Insolation and latitudes. On an average, the temperature of ocean water. On an average, temperature of ocean water decreases from equator towards poles. Temperature of ocean water decreases from equator towards poles. But the highest temperatures, जो हमने क्लाइमेट में लिखा है वही लिखना है as it is. But the highest temperatures are found in the subtropical high pressure belt. Average temperatures are found at subtropical high pressure belt. Subtropical high pressure belt. Because the equatorial regions receive everyday rainfall, receive
diurnal. Everyday rainfall, comma, and have thick cloud cover. What is the answer for this? तीनों है या यही है? टेम्परेचर्स इन द ओशंस, A and C. Why not B? See, इक्वेटोरियल रीजन्स, डू दे हैव अ हाई अल्बिडो? अगर अल्बिडो हाई है तो इंसोलेशन ज्यादा होगा या कम होगा? ग्राउंड पे अल्बिडो क्यों ज्यादा है? आज स्नो है इसलिए या क्लाउड है इसलिए? क्लाउड्स है इसलिए. सो क्लाउड्स विल अलाउ द सन रेज टू रीच द ग्राउंड या नहीं? नहीं. सो लेस इंसोलेशन इज ऑल्सो राइट. Insolation is sun rays. If they are falling on the clouds, their clouds will reflect back. If they are falling on the grounds will reflect back. इंसुलेशन किस चीज का कह रहे हैं? Insolation means insolation. It is of the sun rays. Albedo is always associated with insolation. Answer is इसका A, B and C. Who has doubt कि answer why it is A, B and C? सर जो टेम्परेचर ऑफ ओशंस होगा वो रिलेटेड होगा कि हीटिंग कैपेसिटी ऑफ वेव्स, हीटिंग कैपेसिटी ऑफ सन रेज से. तो सर इंसुलेशन का मतलब है इनकमिंग सोलर रेज. Yes. सर सोलर रेज तो आई नहीं तो सोलर रेज आ रही है. सोलर रेज आ रही है. ट्रॉपिक्स में सोलर रेज आएगी सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक. इक्वेटर में सोलर रेज आएगी सुबह 7 बजे से शाम को 4 बजे तक, क्योंकि 4 के बाद क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होगा. कन्वेक्शनल रेनफॉल डेली. एंड कोई भी क्लाउड्स का इंसोलेशन इज हाई. क्लाउड्स का एवरेज अल्बिडो इज हाई. सो द क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड विल रिड्यूस द इंसोलेशन. एंड हमने लिखा है क्लाइमेट में इक्वेटोरियल रीजन्स रिसीव लेस इंसोलेशन बिकॉज ऑफ क्लाउड कवर. उसी से अप्लाइड क्वेश्चन पूछा है ये. अंडरस्टैंडिंग दिस? सो ये है मिस्टेक्स. अवॉइड दिस मिस्टेक्स इन द एग्जाम. क्या आप सबसे पहले लगता है आंसर इज ए एंड सी. अरे इक्वेटर रीजन है, इंसोलेशन तो हाई ही होना चाहिए. नो. इक्वेटोरियल रीजन्स हैव लेस इंसोलेशन बिकॉज दे हैव रेन्स. रेन्स के लिए क्लाउड्स चाहिए. द क्लाउड्स, जब भी बादल होते हैं तो धूप आती है या कम हो जाती है? सो यू गेट एन आंसर देयर. सो द इंसोलेशन इज लेसर. गेटिंग इट? या कंफ्यूजन है अभी भी? क्या? किसका? एवरेज टेम्परेचर ज्यादा होगा क्योंकि विंटर्स नहीं होती. एवरेज टेम्परेचर मतलब क्या? मैक्सिमम टेम्परेचर इन ए ईयर एंड मिनिमम टेम्परेचर इन ए ईयर. दैट इज एवरेज. एवरेज कभी रियल फैक्ट्स थोड़ी बताता है. एवरेज क्या है? समर्स में 45 डिग्रीज, विंटर्स में 5 डिग्री दिल्ली. तो एवरेज टेम्परेचर इसका कम हो जाएगा 25 डिग्रीज, राइट, डिवाइडेड बाय 2. केरला में एवरेज टेम्परेचर क्या है? समर्स में 35 डिग्री,
विंटर्स में 30 डिग्री। तो धूप कहाँ पे ज़्यादा है, दिल्ली में या केरला में? धूप कहाँ पे ज़्यादा है, इंसोलेशन कहाँ ज़्यादा है, दिल्ली में या केरला में? दिल्ली में, समर्स में। स्टिल डाउट इसमें? वाई द आंसर इज लेस इंसोलेशन? मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं, राइट तो होना चाहिए चीज इसमें, ये तो रॉन्ग ही है ना। इक्वेटोरियल रीजन्स रिसीव लेस इंसुलेशन, यू शुड रिमेंबर दैट। 12 से 3 बजे तक हाई इंसुलेशन, उसके बाद इंसुलेशन नहीं, लेस इंसुलेशन। एवरेज इंसुलेशन इज लेस इन द इक्वेटोरियल रीजन्स, ये लिखवाया है मैंने क्लाइमेट में, इक्वेटोरियल रीजन्स रिसीव लेस इंसुलेशंस। इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड रहता है, नॉट अमाउंट ऑफ इंसुलेशन। फाइन, याद रखना आंसर इज दिस, इक्वेटोरियल रीजन्स रिसीव लेस इंसुलेशन बिकॉज दे हैव throughout the year. Fine with this? Next factor. What is the second factor affecting the temperature? Warm current आ रहा है, कहीं जगह cold current आ रहा है, that means ocean currents. Ocean currents. Ocean currents. Warm currents increase the temperature of the place. Warm currents increase the temperature of a place, while the cold currents will decrease the temperature of a region. Third, of a region or of a place. Prevailing winds, ये थोड़ा टेक्निकल है। Onshore winds will increase the temperature or will decrease the temperature? Onshore winds. ये लैंड है, ये वाटर है, ये वाटर है, दिस इज ऑन शोर विंड एंड दिस इज ऑफ शोर विंड. सो द विंड इज कमिंग ऑन शोर, इट इज पाइलिंग अप सरफेस वाटर. सरफेस वाटर गर्म होता है, ठंडा होता है? गर्म होता है. सो इट विल इंक्रीज द टेम्परेचर. Offshore wind, it will remove the surface water. As soon as the surface water is removed, नीचे से there will be upwelling of cold water, and therefore offshore wind हमेशा decrease करेगा. हर जगह होगा, हर जगह होगा जहाँ से surface water is removed. जनरल बताओ मुझे, चाहे विंटर हो या समर्स हो, जनरल, आर्टिक हो, इक्वेटर हो, ऑलवेज ट्रू है. ऑनशोर विंड्स एंड ऑफशोर, चाहे टेम्परेचर 27 डिग्री हो या 45 डिग्री हो, ऑनशोर विंड्स विल पाइल अप द सरफेस वाटर. इंडिया में विंटर्स में सरफेस वाटर इज गर्म than the subsurface water, so piling up of surface water will result into increase of the temperature. Removal of surface water will cause upwelling. So upwelling, I told you, after 1 kilometer what is the temperature of ocean water? 1 degree Celsius. So नीचे से पानी जब ऊपर आएगा तो it will decrease the temperature. समझ में आया? So that is the third, prevailing winds. जो आपने बताया कि सर जो पाइलअप करेगा वो लैंड के पास आके तो पाइलअप करेगा, तो सर कहीं पे तो टेम्परेचर कम हो रहा होगा ना, क्योंकि वहां से वो सरफेस वाटर हटा रहा है. हम लिखेंगे, देखो कैसे. ऑनशोर और ऑफशोर किसके इसमें रेफरेंस में है?
लैंड के ही तो तो सर जो लैंड से मतलब सी ब्रीज आ रही है वो कहीं ना कहीं से तो वाटर हटाए। हाँ, तो वहाँ से ऑफशोर, वहाँ पे उस जगह हम ऑफशोर कह रहे हैं ना, जहाँ से हटा रही है वो ऑफशोर हो गया, जहाँ से पाइलअप हो रही है उसको ऑनशोर हो गया। सर ओशन बहुत बड़ा है, मतलब मेरे कहने का मतलब ओशन बहुत बड़ा है, तो कहीं मिडल में से भी तो वाटर हटाई रही होगी ऑप्शन से भी, तो अभी तो मिडल में से नहीं है, मिडल में वेव्स एंड टाइड्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, मिडल में से नहीं हटाएगी। ये लोकल फिनोमेना है, मिडल में से कभी नहीं हटाएगी, क्योंकि अगर ये विंड ऑनशोर हो रही है तो किसी और जगह से ऑफशोर ही हो रही है, मिडल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर तो स्मॉलर फिनोमेना तो आपको ओशन बॉटम रिलीफ भी देखना पड़ेगा, नीचे जहाँ वॉल्केनो है वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, वो सब हम भूल जाते हैं, हम एक जनरल पिक्चर बनाते हैं। फाइन, यू कैन टेक डाउन ऑनशोर विंड्स cause piling up of surface water, piling up of surface water, which causes increase in temperature near the coast. Understand this line, which causes increase in the temperature near the coast. कहाँ पे? हाँ, वहाँ पे होगा। ओरोग्राफिक रेनफॉल कभी समंदर पे नहीं होगा। यू कैन टेक डाउन द स्टेटमेंट, बाकी बाद में डाउट्स, नहीं तो खत्म ही नहीं होगा। ऑफशोर विंड्स will remove the surface water, which causes piling up of water, and therefore which causes upwelling of water, not piling, upwelling of water, and therefore temperature decreases. Example 1. Open your atlas. Open the map of North America. If you are having atlas, open the map of North America. Tell me किसका टेम्परेचर ज्यादा है, गल्फ ऑफ मैक्सिको या गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, यूजिंग दिस बैकग्राउंड। गल्फ ऑफ मैक्सिको, क्यों? वार्म करंट है एंड ऑनशोर विंड है। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में कोल्ड करंट भी है एंड ऑफशोर विंड्स भी है। अंडरस्टैंडिंग दिस? सेकेंड एग्जाम्पल, थोड़ा नॉर्थ में जाना। लैब्राडोर सी का टेम्परेचर ज्यादा होगा या नॉर्थ सी का ज्यादा होगा? किसका ज्यादा होगा? नॉर्थ सी इज नियर यूके एट द सेम लैटिट्यूड्स एंड लैब्राडोर इज नियर कैनेडा एट द सेम लैटिट्यूड। सो हुज टेम्परेचर विल बी ग्रेटर? नॉर्थ सी, बिकॉज ऑनशोर वेस्टर्लीज and offshore westerlies. Westerlies, this is the zone of westerlies. So westerlies are onshore near Europe. This part is Europe. This is the North Sea. So this are onshore and these are offshore. इसलिए यहाँ पे देखना, you can see one relation. जहाँ जहाँ winds are offshore, there is cold current. जहाँ जहाँ winds are onshore, there is a warm current. Getting it? This is the zone of westerlies. These are how westerlies are flowing. So westerlies are warm winds. Though they will bring onshore. So यहाँ पे North Sea है, उसका temperature is greater. Labrador Sea का temperature is lesser. Fine with this? So take down. These are the examples that they ask you in the PT, preliminary exams.
Example 1, first example. Gulf of Mexico has greater temperature than Gulf of California. इंडिया के लिए ये अप्लाई नहीं होता क्योंकि इंडिया में कभी विंड्स ऑनशोर है, कभी विंड्स ऑफशोर है. सेकेंडली, इंडिया डज नॉट हैव आर्कटिक का वाटर्स नॉर्थ इंडियन ओशन में. यस, वार्म ही है, ऑनशोर ही है इंडिया में, चाहे अरेबियन सी से ऑनशोर है या बे ऑफ बंगाल से ऑनशोर है. सेकेंड एग्जाम्पल, नॉर्थ सी रिकॉर्ड्स हायर टेम्परेचर देन द Labrador Sea. North Sea records higher temperature than the Labrador Sea. Question लिखो. Question लिखो. Consider the following statements. Consider the following statements. Question. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ये ऐसे फैक्ट्स है, अगर नीचे एमसीक्यू सॉल्व किया तो कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 1, इन लोअर लैटिट्यूड्स द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स records higher temperature than the western coast. Eastern coast of the continents record higher temperature than the western coast. In the lower latitudes, eastern coast of the continents record higher temperature than the western coast. Second statement, in the higher latitudes, western coast of the continents record higher temperature than eastern coast. Western coast of the continents record higher temperature than eastern coast. Higher temperature than eastern coast. Identify correct statements. 1 only, 2 only, both. Understood? Q. Lower latitudes में trade winds, onshore on the eastern coast. Higher latitudes में westerlies, onshore on the western coast. So the answer is both. Actually currents क्या है? जहाँ onshore है हम कहते हैं warm current, जहाँ offshore है हम कहते हैं cold current. सर ये जो प्रेवेलेंट विंड वाला जो ये पॉइंट है इसमें फैक्टर है, ये तो सर लैंड जहाँ पे होगी वहीं पे हम. हाँ, बस. पर ये बुक्स में ये फैक्टर है, एनसीईआरटी में ये फैक्टर है, तो करना है. नहीं, वो मिडल लैटिट्यूड है, वो मिडल. हायर लैटिट्यूड मतलब 45 के ऊपर. इनफैक्ट इंडियन ज्योग्राफी तो आई विल डू इन सच अ वे कि आपको क्रैश कोर्स अटेंड करने की ज़रूरत ही नहीं है. विल सॉल्व एवरीडे एमसीक्यूज, डेली एमसीक्यूज जो हम पढ़ेंगे उसमें से, सो दैट बाद में आपको क्रैश कोर्स अटेंड करने की ज़रूरत नहीं होगी. नेक्स्ट फैक्टर, weather conditions. You only tell me, stability मतलब higher temperature या lower temperature? Stability. देखो, it depends upon where. So जहाँ जहाँ dry conditions है, stable conditions है, there will be greater evaporation and therefore the temperature will be comparatively higher. Example, subtropical high pressure belt. So atmospheric conditions मतलब हमें direct stability instability नहीं लिखना है. We have to write in such a way that the conditions which promote evaporation, subtropical high pressure belt, temperature will be higher. The conditions which promote instability, rainfall भी हो सकता है, snowfall भी हो सकता है, वहाँ पे temperature will be lower. So
The conditions promoting stability, and evaporation will have higher temperature. Will have higher temperature. And in the regions of instability, the temperature will be lower. बहुत ही minor point है ये. And last point is, I guess it is the fifth point. जैसे instability, हाँ वही हमने लिखा. Enclosed seas. Now you understand this again is technical. I take two vessels. ये है vessel 1A and ये है vessel B. दोनों का dimensions height wise दोनों का same है. दोनों में मैंने पानी भरा है. And इस दोनों vessels को मैंने रखा है over gas. किसका पानी ज़्यादा गर्म होगा? B का. Fine. So can I say small and marginal seas or enclosed seas in lower latitudes? Lower latitudes मतलब गैस ही है, temperature ज़्यादा है, will record more temperature as compared to the bigger seas. So Mediterranean Sea will have higher temperature as compared to the Atlantic Ocean. Black Sea and the Caspian Sea will have higher temperature as compared to the Mediterranean Sea. Fine? Getting it? अब मैंने इन दोनों वेसल्स को लिया और फ्रिज में रखा. किसका टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा होगा? फिर से बी का, क्योंकि एरिया कम है. बट इन द हायर लैटिट्यूड एनक्लोज्ड एंड मार्जिनल सीज विल रिकॉर्ड लोअर टेम्परेचर दैन द सराउंडिंग ओशंस. राइट? यही सी को अप्लाई करो. सो लोअर लैटिट्यूड्स में वेसल बी मतलब छोटा सी विल रिकॉर्ड हायर टेम्परेचर. इन द हायर लैटिट्यूड्स कंडीशन इज रिवर्स्ड, क्योंकि ये जल्दी ठंडा हो जाएगा. इसी को आप अप्लाई करना सैलिनिटी में. जिसका ज़्यादा टेम्परेचर उसमें ज़्यादा इवेपोरेशन. सो डेड सी हैज़ हाईएस्ट सैलिनिटी. बाल्टिक सी हायर लैटिट्यूड में बहुत छोटा सी है, इट हैज़ लीस्ट सैलिनिटी, क्योंकि उसमें इवेपोरेशन ही नहीं है, एज इट इज़ लोकेटेड इन द पोल्स. गेटिंग इट? गेटिंग एवरीवन? सो सैलिनिटी का मतलब सैलिनिटी इज बेस्ड ऑन इवेपोरेशन. सो जो ठंडा ही रह रहा है उसमें से इवेपोरेशन ही नहीं है. सो वी आर नॉट गोइंग टू राइट सैलिनिटी वाला पॉइंट. सो यू कैन टेक डाउन स्मॉल एंड मार्जिनल सीज. स्मॉल एंड मार्जिनल सीज इन द लो लैटिट्यूड्स, record higher temperature than the open seas. In the low latitudes, record higher temperature than the open seas. Example: Red Sea versus Mediterranean Sea. Red Sea छोटा या बड़ा है? छोटा है. Versus Mediterranean Sea. Getting it? और रेड सी वर्सेस यू कैन से अरेबियन सी. अरेबियन सी बड़ा है, रेड सी छोटा है. फाइन? सेम लैटिट्यूड पे, इसलिए मैंने मेडिटेरेनियन सी, रेड सी, अरेबियन सी एक सारे सेम लैटिट्यूड्स पे. तो रेड सी का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा इन सब में. फाइन? नेक्स्ट पॉइंट एनक्लोज्ड सीज इन हाई लैटिट्यूड्स. Enclosed seas in high latitudes. Record क्या higher या lower temperature? Lower temperature than the open sea. Example:
बाल्टिक सी, वर्सेस उसी लैटिट्यूड का सी हमें पकड़ना है, नॉर्थ सी, बाल्टिक सी वर्सेस नॉर्थ सी. This is Europe, this is UK, this is the North Sea, and this is Baltic Sea. Fine. So that is the only for prelims. Horizontal distribution of temperature. Horizontal distribution of temperature. हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स. वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब फ्रॉम 0 किलोमीटर टू डेप्थ. सो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हमारा सेम एज 0.1 है फैक्टर. क्या है हॉरिजॉन्टल? इक्वेटर पे से पोल की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर विल इंक्रीज, बट इक्वेटर विल नॉट हैव द हाईएस्ट टेम्परेचर. क्यों नहीं है हाईएस्ट टेम्परेचर ओवर द इक्वेटर? बिकॉज इंसोलेशन इज लेस एज क्लाउड कवर इज देयर, रेनफॉल इज देयर एवरी डे. फाइन. एंड पोलर कहाँ पे है हाईएस्ट टेम्परेचर? दैट इज द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट. सो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर मीन्स फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स. सो कैन यू राइट देयर सेम एज फैक्टर 1 latitudes. Fine with this? समझ में आया सबको? And vertical distribution is important. ये है सबसे commonly asked question prelims में, टेम्परेचर में से. 0 kilometers, 6,000 meters या 6 kilometers, 6,000 meters या 6 kilometers. 200 meters तक, what is this zone? 14 zone. So just remember, this is up to 200 meters, this line. This is 500 meters. This is 1 kilometer. Fine? Or I'll write here 200 meter, 500 meters, 1 kilometer. ये थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ. So this is a graph of depth of water versus the temperature of water. 0 kilometers, this is 0 degree Celsius, this is 1 degree Celsius, this is somewhere around 20 degree Celsius, and this is somewhere around 25 degree Celsius. Getting this? So x axis पे क्या है? Temperature. यहाँ पे क्या है? Depth. So understand, average distribution of vertical distribution of temperature in the sea water. ये जो पानी का ये जो है black lines मैं हटा रहा हूँ. So just for your understanding. The upper part receives higher temperature, insolation. Insolation is greater up to 200 meters. So as you go to the depth, temperature धीरे धीरे decrease होगा, right? क्योंकि sun rays का intensity is decreasing. Temperature ऐसे धीरे decrease होगा
बट 500 मीटर के बाद 200 मीटर तक द सी वाटर इज वार्मर बिकॉज इट रिसीव सनलाइट. उसका वार्मिंग इफेक्ट इज सीन अप टू 500 मीटर्स. बट 500 मीटर के बाद द टेम्परेचर सडनली डिक्रीजेस एंड बिकम्स 1 डिग्री सेल्सियस एट द डेप्थ ऑफ 1 किलोमीटर. एंड उसके बाद द टेम्परेचर इज कांस्टेंट. कितना है टेम्परेचर? 1 degree Celsius. This is how the vertical distribution of temperature is. The upper layer is the layer of warm water. The बीच में का layer, forget about the photic zone now. बीच में का layer is the layer which is known specifically as thermocline layer. So what is thermocline layer? A narrow zone, सिर्फ आधा किलोमीटर का, which experiences sudden drop of temperature with increasing depth is what is known as thermocline. That is from 20, 25, whatever may be the surface water, it increases sudden decrease till 1 degree Celsius. And then bottom layer is the layer of cold water. So this is what is an warm layer. After that we have thermocline layer where the temperature suddenly decreases with the increasing depth, and then we have the cold layer. So prelims mein generally they ask you what is thermocline layer. So thermocline layer is a narrow zone between 500 to 1000 meters, that is 500.5 kilometers to 1 kilometer, where there is sudden decrease of temperature with the increasing depth. Fine with this? So this is how the vertical distribution of ocean water is at each and every place except poles. Poles पे क्यों नहीं? Understand. What is there in the polar regions? In the polar regions, ऊपर का sea surface is frozen. Therefore, उसका temperature is greater than, less than 0 degree Celsius, right? But जैसे नीचे आएंगे, तो temperature increases and it becomes 1 degree Celsius. Getting it? So ये जब ग्राफ बनाओगे मेंस में अगर आता है तो you have to make a line like this in the bracket and say temperature in middle and lower latitudes. I have to make the other line. If you choose to draw that, if you don't choose to draw, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, but आंसर में जरूर मेंशन करना है. एक और क्लाइन है Halocline, salinity. Vertical distribution in high latitudes or poles. Understood? This graph is there even in your NCERT. Understood that green line? What is this green line? Shows the vertical distribution of temperature at poles. So what is there in the poles? Surface water is frozen. Ice है, that means temperature is 0, below 0 degree Celsius. जैसे हम नीचे आते हैं, entire ocean is never frozen. इतनी ज़्यादा ठंडी कभी नहीं होती कि entire ocean is frozen. Only the top layer of the ice is frozen. Top layer of the ocean is frozen. Therefore we have icebergs. But therefore entire ocean is not frozen. मतलब जैसे आप नीचे आओगे तो temperature will increase and it will become 1 degree Celsius. That is why 0, because this graph shows temperature versus depth. So the temperature goes on increasing. Understood now? याद रखना, कभी भी पूरा का पूरा ओशन फ्रीज नहीं हो सकता बिकॉज x dash of water is very high, specific heat of water is very high. So to freeze the entire water of 6000 kilometers, उसके लिए ice age लगेगा हमें, not the normal cooling.
यस, आइस एज में पूरा फ्रीज हो गया। आइस एज में ग्लेशियर्स इंडिया में थे, छोटा नागपुर प्लाटू। हाँ, श्रीनगर में खेलने के लिए इसलिए मना किया क्योंकि लोगों को लगता है पूरा डल लेक फ्रीज हुआ, ऐसे नहीं होता। तो लोग जाते हैं उसमें क्रिकेट खेलने एंड आइस ब्रेक हो जाता है, बिकॉज ओनली सरफेस लेयर इज फ्रोजन। एंड वंस यू गो इन सच अ कोल्ड वाटर यू विल वैसे ही डाई बिकॉज ऑफ फ्रॉस्ट बाइट। एंड सेकेंडली फिर वो नीचे से बाहर आना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज अंदर जाके आप घूम जाते हो पानी में, यू डोंट नो कि ऊपर की साइड कौन सी है, नीचे की कौन सी है। ऐसा जरूरी नहीं कि इफ दिस इज होल तो आप एग्जैक्टली नीचे जाके उस होल से बाहर आओगे। आप यहाँ पे जाओगे और ज्यादा डर जाओगे कि कहाँ गया, हाउ कैन आई ब्रेक द आइस। एंड इतनी अंदर एनर्जी नहीं बैठती कि यू कैन ब्रेक द आइस। सो यू कैन टेक डाउन vertical distribution. There are three layers. There are three layers of ocean water temperature. Of ocean water temperature. The first layer is the layer of warm water. Take in points. First layer is the layer of warm water. Is the layer of warm water up to the depth of 500 meters. Up to the depth of 500 meters. Up to the depth of 500 meters. 500 warm layer, 500. This is because the sun rays can penetrate up to photic zone. Sun rays can penetrate up to photic zone. That is 200 meters. 200 meters. देखो फोटिक जोन तक अगर सनरेज पेनिट्रेट हो रही है तो आसपास का पानी भी तो गर्म होगा। ऐसा नहीं कि 200 मीटर के बाद सडनली देयर विल बी गेटिंग इट। देयरफॉर दैट लेयर इज अप टू 500 मीटर्स। नेक्स्ट पॉइंट इन द सेम पॉइंट, फॉर पॉइंट नंबर 1 में ही, दिस लेयर इज प्रेजेंट थ्रू आउट द ईयर। दिस लेयर इज प्रेजेंट थ्रू आउट द ईयर इन ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स। इन ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स। But disappears in the middle latitude. Disappears in the middle latitude. Disappears in the middle latitudes during the winter season. During the winter season. Full stop. Understood? आज का न्यूज़ डल लेक. So that will be the same case in the middle latitudes. So middle latitudes में surface में become frozen. So this layer will disappear. Fine with this? Second layer, thermocline layer. उसका heading है thermocline layer. Thermocline layer. Thermocline layer. In this layer, there is a sudden decrease of temperature. In this layer, there is a sudden decrease of temperature with increasing depth. Decrease of temperature with the increasing depth. Thermocline zone is a narrow zone. Thermocline zone. Thermo means temperature. Cline matlab change. Thermocline zone is a narrow zone where temperature suddenly decreases. Where temperature suddenly decreases.
with increasing depth. मैंने NCERT की definition भी दे दी आपको. Second part is definition with increasing depth. Fine. Third layer, cold denser layer. उसकी heading है cold. So warm, thermocline and cold. Same होगा in salinity. The only difference is thermocline के बदले आप लिखोगे halocline. Getting it? Halocline layer. Cold denser layer. After 1 kilometer, the temperature is uniform in the bracket 1 degree Celsius. This layer having cold denser water is known as cold layer, which extends up to bottom of ocean. Last point, in the polar regions, there is only one layer. Which layer? Cold या warm water? That is cold layer. So what is salinity? So salt that is present in the water. Technically it is known as the amount of salt that is present in 1 gram of water, not 1 liter of water or 1 kg of water. Understand? The amount of salt in grams present in 1 kg of water, not in 1 liter of water. Salinity के लिए we consider kg of water and it is expressed as parts per thousand, percentage per 100, per 1000. Getting it? So salinity is expressed as parts per 1000. अब is ocean water fresh water या saline water? Saline water. क्यों saline है? कौन सा salt उसमें सबसे ज़्यादा है? NaCl. So based on the salinity, we divide the water into, understand here, 2 types. Fresh water, brackish water, saline water. ये वैसे आपको ज्योग्राफी में नहीं, एनवायरमेंट इकोलॉजी में होता है, बट आई एम टेलिंग यू हियर इट्स एंड ब्राइन वाटर. फ्रेश वाटर जिसका सैलिनिटी इज बिटवीन 0 to 5 पार्ट्स पर 1000, मतलब 5 ग्राम सॉल्ट है. दैट इज व्हाट इज नोन एज एन फ्रेश वाटर. कोई भी नदी का पानी. ब्रैकिश वाटर is greater than 5.1 to 35 parts per 1000. Saline water 35 parts per 1000 till
50 parts per thousand. And brine water जिसमें amount of salt is greater than 50 parts per thousand. ब्राइन. देखो ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट इकोलॉजी में सिर्फ इतना फर्क है, ज्योग्राफी में इन लेक्स को सलाइन वाटर लेक्स कहेंगे, एनवायरमेंट इकोलॉजी इज मोर स्पेसिफिक, उनको ब्राइन वाटर लेक्स कहेंगे. ब्राइन वाटर मीन्स एक्सट्रीमली सलाइन वाटर. अब गिव मी एन एग्जांपल ऑफ फ्रेश वाटर. वुलर लेक. एंड बस वुलर लेक ही, डल लेक, उसके बाद लेक सुपीरियर, उसके बाद गंगा, यमुना, क्या है? Rivers. All the rivers in the world are fresh water. So the fresh water can be of two types. It can be flowing, it can be stagnant. So based on this, freshwater biome is further divided into lotic, biome. Biome means जहाँ पे life will survive. That is moving water. And दूसरा lentic. That is stagnant. मेरे को इसके एग्जाम्पल्स बताओ इंडिया के, सब सारे इंपॉर्टेंट. लोटिक मतलब रिवर्स, तो इसमें ऑल द रिवर्स विल कम, जिसमें वाटर इज मूविंग. लेंटिक बायोम का इंडिया में एग्जाम्पल वुलर लेक. नहीं, आइस कैप्स अलग ही है. दिस इज वाटर, आइस कैप इज सॉलिड, वो ग्लेशियर से अलग ही है. एक ही है फ्रेश वाटर लेक, डल लेक. कहां पे है डल लेक? श्रीनगर. कहां पे है वुलर लेक? वेयर इज वुलर लेक? कश्मीर. विच इज लोकेटेड ऑन रिवर झेलम, वुलर और दल? There is an example of an oxbow lake. कोई और फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया जो हमें पता होना चाहिए? कोलेरू. कौन से रिवर पे? केरला में नहीं है. आंध्रा. पिछले साल का ही क्वेश्चन था, नेचुरल है या आर्टिफिशियल है? सो कोलेरू इज व्हाट? नेचुरल लेक. डेल्टा में जाके क्यों बनाना है आपको आर्टिफिशियल लेक? लेक कहाँ बनाओगे आप आर्टिफिशियल? जहाँ पानी कम है. तो डेल्टा में इतना पानी है कि लेक वहाँ पे बना के क्या करोगे? फिर वहाँ पे आप सॉल्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम लगाओगे उसमें. सो लॉजिकली कभी क्या ऑप्शन था? चिलिका, कोल्लेरू, कोडाईकनाल एंड नैनीताल. विच ऑफ द, कोई भी एक ताल, विच ऑफ देम इज मैन मेड लेक? सो आंसर इज कोडाईकनाल इटसेल्फ, क्योंकि पेनिनसुलर प्लाटो में आर्टिफिशियल लेक्स बनाने पड़ेंगे एज इट डज नॉट हैव इनफ वाटर. कोल्लेरू, मोस्ट ऑफ द पीपल मार्क कोल्लेरू. वन मोर एग्जाम्पल. लोकटक. दिस ऑल आर नेचुरल लेक्स. कहां पे है लोकटक लेक? विच स्टेट? मणिपुर. किसके लिए फेमस है? न्यूज में भी था पिछले महीने. सांगाई फेस्टिवल. इट इज फेमस फॉर सांगाई. दैट इज द डांसिंग डियर. यू विल अंडरस्टैंड व्हाई इट डांसेस. क्यों? तो उसके ऊपर रहता है इसलिए नाचना है. तो गिव मी एन एग्जांपल ऑफ ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया. चिल्का लेक. एनी अदर? पुलिकट लेक. वन मोर. वेम्बनाड लेक. वन मोर.
Ashtamudi Lake, both are in Kerala. Pulicat is in Tamil Nadu. Chilika, Orissa. The largest lake of Asia, largest brackish water lake in Asia, the largest lake in India, and the second largest lagoon in the world. लार्जेस्ट न्यूजीलैंड के पास है, बहुत डिफिकल्ट नाम है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं. न्यूजीलैंड के ऊपर एक छोटी कंट्री है और पूरी लगून ही है पॉलिनेशियन आइलैंड्स में. फाइन. सलाइन वाटर का एग्जांपल इन इंडिया, वी विल टेक इट एज एन सांबर लेक. We'll take this as an Sambar lake. Sambar can be saline also, Sambar can be brine also. Environment ecology में उसको हम brine water lake बोलेंगे, but UPSC आपको पूछेगा saline है कि नहीं, so it can be saline also. Extreme saline is brine. World में Dead Sea. Yes, Dead Sea is a lake. ग्रेट सॉल्ट लेक उताह, कौन सा, कहाँ पे उताह? USA. डेड सी इज बिटवीन विच टू कंट्रीज? इजराइल एंड टर्की. जॉर्डन. एंड सबसे हाईएस्ट सैलिनिटी इन द वर्ल्ड इज लेक लेक वैन गोलू इन टर्की. लेक वैन गोलू इन टर्की. एनसीईआरटी में दिया है ये तीनों एक बॉक्स में. सो हाईएस्ट सैलिनिटी इन द वर्ल्ड इज नॉट डेड सी, इट इज लेक वैन गोलू टर्की. सांबर राजस्थान. सांबर इज राजस्थान. मैं कहता हूँ इंडिया में दाल भी है, चिल्की वाली दाल भी है, एंड देयर इज अ सांबर आल्सो, बट सांबर राजस्थान में है. सो फाइन विद दिस. सलाइन वाटर में सारे वाटर ओशंस आएंगे, ऑल द ओशंस विल कम इन सलाइन वाटर. एग्जाम में आता है कि चिल्का लेक इज सलाइन वाटर ब्रैकिश. चिल्का इज ऑलवेज ब्रैकिश, ऐसे आएगा, सलाइन नहीं, ब्रैकिश. ब्रैकिश है इसलिए मैनग्रूव्स है. मैनग्रूव्स कैन नॉट ग्रो इन सलाइन वाटर. सो मूविंग वाटर बायोम, आपके पास्ट ईयर क्वेश्चंस जाके देखना. मूविंग वाटर बायोम इज नोन एज विच बायोम? फ्रेश वाटर, लोटिक. स्टैग्नेंट वाटर इज नोन एज लेंटिक. सो मुरारी आधा फ्रेश वाटर, आधा saline water, brackish water. So Muriri is considered as an So Muriri is considered as a Pangangso is considered as an brackish water lake. So Muriri is a freshwater lake. Brackish है Pangangso. So Muriri and Pangangso इन दोनों के इसमें नहीं आएगा. आपके टेस्ट में पूछा था बहुत पहले. It will not be given in any example because it depends upon seasons. वो कभी fresh water है, कभी brackish water है. Especially Pangangso. इसलिए Pangangso में there is no life found. वो 33C का पानी है बचा हुआ. So it has to be saline. Getting it? Fine. Now you can take down the definition of salinity. Salinity. Salinity is calculated
as the amount of salt in grams, amount of salt in grams dissolved in 100 grams of sea water. 100 grams मतलब 1 kg. 1000 grams of sea water, sorry. Dissolved in 1000 grams of sea water. 1 kg of sea water. Now take down. The highest salinity is NaCl. कितना है? 78%. सोडियम क्लोराइड 77.77 मतलब 78%. उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड. पहले 3 याद रखो, बाकी के मत याद रखो. मैग्नीशियम क्लोराइड 10.9%. मैग्नीशियम क्लोराइड 10.9%. After that, magnesium sulfate 4.7%. 4.7%. क्लोरीन भी होगा. क्लोरीन इसलिए नॉट इन द फ्री फॉर्म. फ्री फॉर्म में नहीं होगा क्लोरीन. फ्री फॉर्म में अगर क्लोरीन होगा तो समंदर में कोई क्लोरीन क्यों डालते हैं स्विमिंग पूल में? सो दैट जो भी जंतु है मर जाएंगे. लाइफ विल नॉट एग्जिस्ट. नेक्स्ट, कैल्शियम सल्फेट 3.6%. कैल्शियम सल्फेट 3.6%. बस ये 4 याद रखो. आपको अगर सब चाहिए तो एनसीईआरटी में है पूरा 8 से 9, बट ये 4 याद रखो. अंडरलाइन द वर्ड कैल्शियम सल्फेट. So the most common salt in sea water are calcium salts or sodium salts? Sodium salts. 3.6%. Calcium sulfate 3.6%. Sodium salts. So therefore sodium के कारण sea water is saline. So I am asking you, what are the sources of sea water salinity? From where sea water got saline? किसने नमक डाला उसमें? Sediments which are taken by the rivers. तो फिर रिवर वाटर स्वीट क्यों है? बह गया मतलब ऐसे तो नहीं कि बंगाल से ही सेडिमेंट डाले बे ऑफ बंगाल में. हिमालय से लाएंगी तो सेडिमेंट शुड फ्लो. तो रॉक्स, हाँ रॉक्स. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. यू आर सेइंग द सेडिमेंट्स brought down by the rivers give salinity to the sea water. तो river is carrying those sediments. So river water भी तो saline होना चाहिए. Then why river water is fresh? River water is moving. So sea water stagnant थोड़ी है. उसमें भी सुनामी है, waves है, tides है, ocean currents है. ग्लेशियर saline water दे रहा है. हमने तो देखा fresh water है सबसे. तो किसमें? तो समंदर का पानी इवेपोरेट हो जाता है कभी? ट्रेंच दिखी है कभी इवेपोरेट होके नीचे? व्हाट इज द आंसर? कभी सोचा है? कहाँ से है रॉक्स? अगर रॉक्स ही है तो मेरा ये कहना है कि रॉक्स लैंड पे है, समंदर पे नहीं है. लैंड में से रॉक्स तोड़ के कौन लेके जा रहा है? रिवर. सो रिवर वाटर शुड बी सलाइन. Reason is river is the most important source of salinity, but the land rivers dominate in calcium salts. कितना है कैल्शियम समंदर में? 3%. River water has 72% of calcium and only 11% of sodium. Understand this. But river will इसलिए because of the more calcium आपके टूथपेस्ट में भी है. So what is the taste of toothpaste? Sweet. Fine. So calcium always gives sweetness to anything. Milk में भी calcium है. कभी milk. So
So therefore we are having the sweet water. But this calcium, when it goes into the sea, the entire calcium is used by marine organisms either to make their exoskeletons, corals. Corals की bodies कहाँ से बनती है? Calcium से. Yeah, it is taken as a source by the fishes. So when initially there was a depression on the earth, there was centuries of rainfall, जिससे पानी भर गया. The initial sea water was sweet. Rivers carried all the sediments and deposited there. When the sediments were deposited, the amount of calcium was eaten. जितने भी calcium है and magnesium was eaten by the marine organisms, and therefore sodium increased. So the source is river, but river water हमेशा sweet होगा. आज वो इतने बड़े बड़े animals नहीं बचे हैं. So today whenever the river is entering the sea, it is putting more fresh water. After centuries, जब वो calcium खा लेंगे animals, then that water will become saline. Understanding? The most important source of salinity is river. But हम देखेंगे in the factors affecting salinity, हम कहेंगे river is decreasing the salinity. Why is it that so? Because river is bringing more of an calcium, fresh water. Understanding? आपके घर में अगर normal you take fresh water, उसमें नमक डालते हो, sodium, then only that water becomes saline. Now if you remove that sodium, if you take some coral, जिंदा coral and put it, जितना भी calcium है वो और खा लेगा, तो sodium का content increase हो जाएगा, and thus the water will become more and more saline. Understanding? So take the sources of salinity. सर लैंड पे अगर जो सर पत्थर है वो बारिश अगर आ रही है वो तो हो जाता है सर सलाइन वो उसके ऊपर सफेद सफेद। हाँ, तो वही तो जा रहा है समंदर में. रिवर कहाँ पे जा रही है इन द एंड? स्टोन्स ही है. स्टोन्स को ही तोड़ के हम सेडिमेंट्स कहते हैं. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सैलिनिटी, सेकंड इंपॉर्टेंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सैलिनिटी, the most important source of salinity is the sediments that are carried by the rivers. Is the sediments that are carried by the rivers and deposited in the sea. But the river water is rich in calcium salts, which are utilized by marine organisms, which are utilized by marine organisms as a source of food or exoskeletons. Exoskeletons. Crabs, prawns खाइए कभी? So बाहर skeleton वो क्या है? कैल्शियम से बना है. Lobsters. Understanding? So this is all, exoskeleton is made up of calcium. Hence, the amount of calcium decreases and the sodium increases. Amount of calcium decreases and the sodium increases. Second source. ये सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है, बाकी का 1% ही कंट्रीब्यूट करते हैं. सेकेंड सोर्स, अंडर सी वॉल्केनिक इरप्शंस. एंड थर्ड सोर्स, मीटियोर्स. आज भी मीटियोर्स गिरते हैं समंदर में, डेली एक गिरता ही है, बट मोस्ट ऑफ देम आर डिस्ट्रॉयड. Luckily वो समंदर में गिरते हैं, because 3 out of 4 times if you throw a stone, it will fall in the water. हमने देखा है. एक ही एग्जाम्पल है, इंडिया में ही है वो एग्जाम्पल. मीटियोर तमिलनाडु के स्कूल बस ड्राइवर के ऊपर गिरा and he died on the spot. So very very bad luck, you can say. The meteor comes. Core
rocks, meteors. Meteors क्या है? Rocks, they will get dissolved and they will mix with the water. Fine with this? So we will stop here. So we will meet on 2nd. कल नहीं. So Happy New Year to you all in advance. So कल अगर मैम लेगी तो ही आना है, शायद मैम लेगी.